Now let's look at a problem which is given on the screen. In this question, you have to find the values of P and Q for which the system of equations, now you are given three equations and these three equations are, and you have to find the values of P and Q for which the system has no solution or unique solution or infinite solutions. So it's a good question based on the conceptual understanding of the Cramer's rule in determinants. I'm going to use the determinants to solve the question. This can also be solved by using matrices, and that would be rather easier than using determinants. So now as usual in this situation, we have to start by calculating the value of delta. Alright, and now we expand this along the first row, so we get 2 times 6 minus q minus p times 3 minus q plus 6 times 1 minus 2, which will be same as 12 minus 2q minus 3p plus pq minus 6, which is same as pq minus 3p minus 2q plus 6. And maybe I can factorize this as p minus 2 times q minus 3, right? From these two terms you can take p common, and from the remaining you can take minus 2 common. So this factorizes to this expression. So let's write it here. This is the value of delta. Now in the same way, we'll try to find the value of delta 1 or d1, whatever you say. So the value of delta 1 will be equal to 8, 5, 4. Alright, and this value of delta 1, if I expand this, now just pause the video at this stage and solve it yourself to get the value of delta 1 as p minus 2 times 4q minus 15. It will simplify to this value. Alright, now in the same way we can find delta 2. Now delta 2 will be equal to, will replace the second column of delta with d1, d2, d3, the remaining columns being same, and let's calculate this. So probably you'll get this as 0. This will turn out as 0. You can expand it yourself. It's a direct expansion of a third order determinant. And then in the same way we can find delta 3. The value of delta 3 will be like we replace d1, d2, d3 in the third column. So we get 2, 1, 1. The first column remains same. Second column is p, 2, 1, and the third column becomes 8, 5, 4. Alright, and now this value becomes p minus 2. This value becomes p minus 2. So now we have 4 values with us. The first value being, these 4 values with us are, we have delta is equal to p minus 2 into q minus 3. We have delta 1, which is p minus 2 into 4q minus 15. We have delta 2, which is 0, and we have delta, let's write it here, delta 3. We have delta 3, which is equal to p minus 2. So we have this information with us. We know how to calculate delta, delta 1, delta 2, delta 3. We have seen this in the previous videos also. So we have these 4 informations with us. And now let's start answering the parts one by one. Let's start with the first part. Now the first part of the question was, that you have to find the values of p and q for which the system has no solution. We want the system should have no solutions. Now I know that for no solutions, delta should be 0 and all of, let's say at least one of delta 1 or delta 2 or delta 3 must be non-zero.
ये कंडीशन हमें पता है होनी चाहिए, मस्ट बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि लेट्स सी कि डेल्टा ज़ीरो कब होता है। तो डेल्टा ज़ीरो होने के लिए हमें पता है कि या तो P2 हो जाए या Q3 हो जाए या दोनों हो जाए, P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 3, है ना। दोनों में से कोई, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो डेल्टा ज़ीरो होगा। बट इफ़ आई पुट P इक्वल टू 2, इफ P इज इक्वल टू 2, तो आप देखोगे P इक्वल टू 2 वाले केस में, P इक्वल टू 2 वाले केस में, इस वाले केस में डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों ही ज़ीरो आ जाएंगे, जबकि मुझे तो कम से कम एक नॉन ज़ीरो चाहिए। सो दैट मीन्स P इक्वल टू 2, ये वाले कंडीशन रूल आउट हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। P इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, तो ये बोथ वाला भी रूल आउट हो गया। दैट लीव्स यू विद ओनली ऑप्शन Q इज इक्वल टू 3। सो आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट बिकम्स Q बिलोंग्स टू 3 एंड P बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो अगर ये कंडीशन हो जाए फर्स्ट पार्ट में, तो आप देखोगे कि डेल्टा ज़ीरो आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, एंड सिंस P कैन बी एनी रियल नंबर अदर देन 2, कम से कम एक डेल्टा तो पक्का नॉन ज़ीरो आने ही वाला है। ठीक है, नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच वॉज यूनिक सोल्यूशन कब होगा। तो लेट्स लुक एट द यूनिक सोल्यूशन। वी नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है। सो फॉर यूनिक सोल्यूशन वी नो दैट delta should be non-zero, which implies P should not be equal to 2 and Q should not be equal to 3, which implies P belongs to R minus 2 and Q belongs to R minus 3. We get this condition. And finally we move to the next part which was इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे। तो एक बार इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का भी देख लेते हैं। दिस इज थर्ड पार्ट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं। सो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यू शुड हैव डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0, ये सब जीरो होने चाहिए। सो नाउ यू कैन मेक आउट फ्रॉम हियर दैट इफ आई पुट P इक्वल टू 2 देन ऑल ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 विल बी जीरो। ठीक है ना, तो P इक्वल टू 2 पे चारों जीरो हो रहे हैं, तो इसका मतलब P इक्वल टू 2 इज जस्टिफाइड। मैं Q को कुछ भी रखूँ, यदि P 2 हो गया और Q कोई भी रियल नंबर हो जाए तो ये चारों ही जीरो आ जाएंगे। तो आंसर फॉर द नेक्स्ट पार्ट विल बी देयरफॉर P बिलोंग्स टू 2, Q बिलोंग्स टू R। दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। सो अगेन conceptual problem, but then the key idea is the simplification. Basically calculating delta 1, delta 2, delta 3 is not that important as the factorization part. This particular part, this particular factorization, this is important. This is very important. The calculating the value of delta 1 or let's say factorizing this value, this becomes important, right? Otherwise the question is simple. You just have to find the 4 determinants. You have to find the values of 4 determinants and then you can simply use the Cramer's rule and the algorithm that we studied in non-homogeneous system.